the 9th session. I know 6th and 7th sessions were done, but the videos are not uploaded, so you won't be able to see that. But later on, I'll recapture them or record them, and then anyways, in the previous session, that is session number 8, yes, we solved exercise 13.2, question number 6, 7 and 8. Alright? This third example was left behind. It was skipped intentionally क्योंकि वहां बहुत सारी explanation है, बहुत सारी तो नहीं, थोड़ी सी, but it's very important. Okay? So what we need to do, देखेंगे. Before we read this question, वो थोड़ा सा explanation. Okay? Just pay attention. What is this, children? Circle. With center O and radius R. You can see a blue circle with center O and radius R, small r. Okay? Then I am drawing another circle whose center is again O. The center is O, but the radius is capital R, large R. It's larger. I can call this circle in different ways for you. I can say blue circle and red circle. Blue circle is with center O and radius smaller. The red circle is with center O and radius. Or I can say the inner circle, that is blue. The outer circle, that is red. There is one more way of saying small circle and large circle. Are you getting me? Inner circle, outer circle, smaller circle, larger circle, circle with center O and radius small r, and circle with center O and radius large R, capital R. What are these two circles called? ऐसे दो सर्कल को क्या कहते हैं? I think circle chapter is over with you. Yes, they are called concentric circles. What is the definition? Two or more circles with same center but different radii. Radius ka plural radii. Two circles or even more circle. I can draw the third circle also with the same center but radius will be different. So two or more circles with same center but different radii, they are called concentric circles. And there is a region between these two concentric circles. Can you see that region? Yes. Can you see this region? Yes. This is region between two concentric circles. Quite often we call it as circular band. इसको क्या कहते हैं? Circular band. कभी-कभी band, not band. कभी-कभी ring कहते हैं. Or it is normally called region between two concentric circles, children. That is very important. Okay. Now I am going to derive the formula to find area of this circular band, the area of this ring, the area of region between two concentric circles. Are you getting me, children? Okay? कैसे ढूंढेंगे? Common sense दौड़ाना है. Can anyone say? How can I find the area of region between the two concentric circles? कैसे ढूंढेंगे? Only one hand raised. Yes, Soumya? We will find the area of red circle. Okay. He says we'll find the area of red circles. Okay. तो ये रेड सर्कल का एरिया है ना? ये ब्लैक लाइन क्या दिखा रहा है? एरिया ऑफ रेड सर्कल. राइट? दिस रीजन शोज area of red circle. Soumya says first we'll have to find area of red circle. Fifth, we will minus the area of blue circle
Then find the area of small circle. Yeah, blue circle. This is area of. Blue circle. Alright. Alright. Are you getting me? First we'll find area of large circle, the red circle. Then we'll find area of small circle, that is blue circle. And then he says, subtract area of small circle from large circle. मैं निकाल रहा हूं जो ब्लू लाइन रीजन है उसको निकाल रहा हूं. आई एम रिमूविंग द ब्लू लाइन रीजन. वो बोला माइनस कर दो स्मॉल सर्कल का एरिया जो ब्लू लाइन रीजन था, है ना. तो ब्लैक लाइन भी निकल गई उसके साथ कुछ कुछ, और जो ब्लैक लाइन रह गई वही तो है वो ग्रीन लाइन. दैट मीन्स द रीजन बिटवीन टू इसकी एरिया बच गई. आर यू गेटिंग मी? सो हियर एरिया ऑफ सर्क्यूलर बैंड इज इक्वल टू, बोलिए, एरिया ऑफ area, okay, I'll put like this, area of circle with center O or radius capital R minus area of circle with center O and radius small. Now what is the formula to find area of circle? Say loudly. Area of circle. अरे बाप रे. Area of circle. Yes, you. Pi r square. Pi r square. Click हो गया. अच्छा, pi r square. Correct. But if you talk about this circle, the radius is capital R. So carefully while writing the formula for radius, I'll put capital R. Pi. Capital R. Yes, capital R square. Area of small circle. Yes. Formula for area of small circle, वो भी तो pi into r square, but radius is small r, so pi small r square. So this is basic. If you want to find area of region between two concentric circle, simple. Find out area of large circle minus area of small circle. Find out that difference. Area of outer circle minus area of small circle या inner circle. ये हो गया. आगे कुछ simplification is possible. What's common in the two terms? Pi. So what is left in the bracket? Capital R square minus small r square. Hey, this can be factorized. What is x square minus y square? X plus y into x minus y. What is a square minus b square? A plus b into a minus b. आप a minus b भी पहले लिख सकते हैं. So what is capital R square minus small r square? Capital R plus small r into capital R. And this is the formula to find area. Area of band बोलो, area of ring बोलो, area of region between two concentric circle बोलो. Are you getting me? Yes. समझ में आ गया? Yes. So what is the formula? Area of outer circle minus area of smaller circle. That is pi capital R square minus pi small r square. Pi common bracket में r square minus r square. So pi into r plus r into r minus r. All right. So what is the area of region between the concentric circle? Pi into sum of radii. Sum of radii. Big radius plus small radius into difference of radii. So this is how you can remember. What is the area of region between two concentric circle? Pi into sum into difference into a pi into sum into difference. What sum? The two radii. What difference? The two radii. Of course, positive difference of capital R minus small r. Positive difference चाहिए. So this is the formula to find area of region between two concentric. ये formula हमें लगेगी इस sum में. We'll need this formula in this sum. Let's see now. So I hope you understood what we did right now. Now we'll solve example 3.
Ready? Yes. Shall I read? Okay. A metal pipe is 77 centimeter long. 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4. The inner diameter of cross section is actually the pipe is cylindrical. जब कट करते हैं तो जो सरफेस हमें मिलती है that is cross section. उसको cross section बोलते हैं. When we cut cucumber into slice or carrot into slice, each slice that you get is its cross section. All right? Okay. And outer diameter being 4.4 centimeter. So we have a cylindrical pipe like this. I'll have to draw like this. This is what? Now it's pipe. Barabar? But this is inner one. This is inner one. Outer के लिए मुझे ये extend करना पड़ेगा. And this is outer. Are you getting me? Yes. इसको भी बोल्ड ही कर देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए. I'll make it bold. All right. This is the outer boundary, which is thick enough. So you'll have to consider the thickness. If the pipe is very thin, then you can ignore this surface. जो top surface होगी और bottom surface होगी उसको हम ignore कर सकते हैं. We can neglect that. But when the pipe is considerably thick, we cannot ignore its top and bottom surface. Because it is open at both the ends. But still it has some surface on the top and some surface on the at the bottom. Are you getting me? Because this pipe is thick. Okay. Now, be careful. First thing we have to find inner curved surface area. बस जो अंदर का भाग है, the inner part. And I remove this like this. The inner part, inner curved surface area. So we'll need only inner diameter, inner radius. And what is the formula to find curved surface area of cylinder? 2 pi 2 pi r h. 2 pi r h. Be careful. See what I am doing here. Chart. Outer curved surface area मतलब बाहर, outside, जिसका डायमीटर बड़ा होगा सो रेडियस भी बड़ा होगा. उसकी भी फॉर्मूला वही है. आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर. लेकिन आउटर में कैपिटल आर और इनर में क्योंकि इनर का रेडियस स्मॉल आर है एंड आउटर का रेडियस कैपिटल आर है. आर यू फॉलोइंग? ध्यान देना. सिट दिस साइड. ओके. See what I am doing now. I am dividing into two parts, inner and outer. What is the actually diameter is given? Inner diameter. What is diameter? Small d. 4 cm. 4 centimeter. Therefore, what will be small radius? 2 इसका आधा डायरेक्ट लिख दिया 2 centimeter because radius is always diameter divided by. And what is the length? Given length that will be the height. बोलो बोलो 77. One thing is good, everything is in terms of centimeter. All right. यहाँ next outer. What is the diameter of outer part surface given? Yes, that is 4.4. Therefore, capital R उसका आधा, half of that. Can you do it directly? Okay, very good. 2.2 centimeter. And when you are doing directly, compulsory you have to write the reason. Because capital R is capital D by 2. And what is the length? What is the height? Same. उसकी जो होती वही. But symbol I am going to put capital H. Outer का capital H और inner का दो small h and capital H are equal. यहाँ मैं लिख दूंगा 77 centimeter.
कॉमन सेंस की बात है. Are you getting me? I'll move to the first target. Okay, what is the first target? Inner curved surface area. All right. Now, inner curved surface area. Use short form. Inner curved surface area. Cylinder की बात कर रहे हैं. So 2 into pi into r into h. 2 pi inner की बात small r और small h. Yes. 2 into 22 upon 7 into radius is 2 into h is 77. 2 ones are 2, 11s are. So this is 88 into 11. Is it? 88, 80, 88, 8, 6, 9. So that is 968. I'll put here area. The word area only. Inner curved surface area. Area. Centimeters. So your first target is achieved. What is the inner curved surface area? समझ में आई बात? We move on to the next. Now outer curved surface area. Semicolon. Outer curved surface area. मतलब इसकी वो भी तो सिलेंडर ही है. So 2 pi r 2 into pi into r into h. Outer capital small भी अच्छी तरह यूज करना. So 2 into 22 upon 7. What is the radius? 2.2. If I remove the decimal, 22 upon 10. Very good. 22 upon 10. And what is the height? Again 77. Alright. This will cancel. And don't go for the cancellation further. 10 ही रखो. Because 10 has two factors, 2 and 5. 2 will cancel, but 5 will remain. Because there is no multiple of 5 in the numerator. फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा. इससे बेहतर हम मल्टीप्लाई कर देंगे. This is this you know perfect square 484 है ना, और 11 2s are 22. जल्दी से हो जाएगा. 0 8 16 9 9 6 8 0 8 16 9. ओके ठीक है. 8 4 16 और 10 and upon 10 10648 upon. So 1064.8. Once again, this is area only, so I'll put the word area. Okay, centimeter. So we have achieved 2 targets. 2 questions are answered. We got the outer curved surface area as well. Now this is very important. Total surface area. Total surface area of pipe. तो वो inner होगा प्लस आउटर होगा प्लस टॉप थोड़ा सा, क्योंकि इतना भाग तो ओपन है, वहां तो सरफेस ही नहीं है. देयर इज नो सरफेस हियर बिकॉज बोथ द एंड्स आर ओपन, बट अराउंड द एजेस देयर इज सम सरफेस एंड दैट इज नथिंग बट बैंड, सर्कुलर बैंड, रिंग या रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक. तो यहां जितनी एरिया होगा उतना ही एरिया वहां होगा. नाउ केयरफुली यूजिंग माय कॉमन सेंस I'm going to write the formula of total surface area. And total surface area. बोलो, inner curved surface area plus outer curved surface area plus बोलो surface area of circular band. चलेगा? Yes. Is that okay for you? नहीं. प्लस 2 टाइम्स टॉप का और बॉटम का दोनों का सेम होगा, सो 2 टाइम्स. आर यू गेटिंग मी? कॉमन सेंस. चलिए अब ये हमारे पास तैयार है. दिस इज रिजल्ट 1. आई विल से दिस इज रिजल्ट 2. दिस इज रेडी फॉर अस. इनर कर्व सरफेस एरिया 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.8 प्लस इसकी फॉर्मूला लिखेंगे 2 टाइम्स. 2 है तो 2 टाइम्स. बोलिए पाई इंटू सम इंटू डिफरेंस. आर प्लस आर माइनस आर. चलिए बाद में करते रहेंगे इसको. टोटल 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू व्हाट इज पाई 22 upon 7 इंटू कैपिटल आर 2.2 और 2 डायरेक्ट कर दो. 2.2 plus 2 is 4.2.
2.2 plus 2 is 4.2. 4.2 is 42 upon 10. Now difference 2.2 minus 2 0.2. अरे भाई साइड पे कर लो 2.2 plus 2.0. So that is 4.2. Now 2.2 minus 2.0. 2 and 0. 0.2. So difference is 0.2. So that is multiplied by 2 upon. Thank God we got multiple of 7. 7 ones are 7. Now I won't go for any cancellation. ऐसे तो 2 5 और 2 5 कैंसिल हो रहा है, लेकिन 5 5 25. फिर वो लोड उठा के चलना पड़ेगा हमको. So better I multiply everything. What I do? या 88 होगा, है ना? 22 4 88 multiplied by 6. 6 8 48. 48 and 58 2. So and upon 100. है ना, upon 100. ये बहुत कम एरिया होने वाली है. This is going to be very less area. All right. So 968. Let's write that same 1064.8 plus this is 528 upon 100. So I'll put the decimal. Is that okay for you? Yes. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. अब बड़े प्रेम से वो टोटल करो. बड़े प्रेम से. मेरे पास जगह ही नहीं है. अरे मैं यहां जगह कर देता हूं. 968.00 क्योंकि 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है. या पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद एक जीरो लिख देंगे. उसके पहले 4 है, 6 है, 0 है और 1 है. अरेंज द डिजिट्स वेरी नाइसली. और पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद 2 8 और उससे पहले 5 8 10 9 और 9 18 1 13 1 0 और 1 2. So that is 2038.08. This is total surface centimeter. I hope you got it. समझ में आया ना? Yes. We'll see the next sum in the exercise which are left. Okay, children. Moving on to the next sum. The third one we had skipped, so we did. Now after the 9th one, we will have 10th one. Okay. Let's see the statement. Figure. मैंने ड्राइंग नहीं किया. In figure. Three parts है ऐसे तो. Okay. Let's see. In figure given below, you see the frame of a lamp shade. जो लैंप हम रखते हैं नाइट लैंप, उसका फ्रेम है लैंप शेड का. इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ. उसके ऊपर बहुत अच्छी डिजाइन वाला डेकोरेटिव कपड़ा लगाना है. राइट. द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20. व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फ्रेम? हाँ, उसका डायमीटर दिया. हाउ मच इज डायमीटर? Therefore, what is the radius? How can you say radius is 10 centimeter? Because radius is equal to diameter divided by 2. And the height is 30 centimeter. So height is 30 centimeter. इसी को कहते हैं रेडियस और इसी को कहते हैं हम लोग हाइट. ऑलराइट, चलिए आगे. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding over the top and bottom of the frame. ये कपड़ा पूरा कर्व सरफेस में लग गया. फिर यहां आपको 2.5 सेंटीमीटर का क्लॉथ नीचे लटकाना है. अगेन फोल्डिंग इज गिवन. सेम वे हियर आल्सो फोल्डिंग इज गिवन. आर यू गेटिंग मी? 2.5 सेंटीमीटर. वो पहले कपड़ा लग गया और उसके ऊपर फोल्डिंग दिया. आर यू गेटिंग मी? Maybe the folding is given in inner side so that cloth remains very well stuck to the curved surface area of the frame. Are you getting me? समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ ऐसे बाउंड्री तक लगाएंगे तो कभी वो कपड़े से थ्रेड निकलने लगेंगे. So उसको अंदर डाला है. That folding. Are you getting my point? Yes. So 2.5 सेंटीमीटर का फोल्डिंग अंदर डाला है. So, okay, आगे देखो. उसके बाद find how much cloth is required to cover the lamp shade.
how much cloth, area of cloth required to cover the lamp shade. That is what we are supposed to find. कहां कहां कपड़ा लगा है? ये सिलिंड्रिकल फ्रेम के कर्व सरफेस पे लगा है और फिर से कर्व सरफेस पे लगा है, इनर कर्व सरफेस पे लगा है, लेकिन द थिकनेस इज निग्लिजिबल. ऑलराइट, तो उसकी हाइट कितनी? 2.5. और वो भी कर्व सरफेस ही होगा. और इसकी हाइट कितनी? वो भी कर्व सरफेस ही होगा. So curve surface area of extra cloth used here plus curve surface area of extra cloth used here. आपकी समझ में आ रहा है? Yes. अब टोटल साथ में भी कर सकते हैं. सी, वो पूरा कपड़ा यहां 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले लो. जरा समझ लो इसको. This I'll increase the height by 2.5 centimeter. This I'll increase the height by 2.5 centimeter. ये कपड़ा थोड़ा लंबा ले लिया मैंने. आपकी समझ में आ रहा है ना? और उसको अंदर फोल्ड कर दिया. सो एक ही झटके में आपकी फॉर्मूला बन जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड? Yes. या तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रेम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ, अथवा एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द टॉप, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द बॉटम. आर यू गेटिंग मी? तो इसको मैं अभी निकाल रहा हूं क्योंकि वो मैं नहीं लेने वाला हूं. राइट, ये लेने वाला. ओके, सी व्हाट फॉर्मूला आई एम राइटिंग. रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्लॉथ, required area of cloth is equal to 2 pi capital R H. सर ये क्या कर दिया? कैपिटल R तो है ही नहीं, हमें बनाना होगा. कैपिटल R फ्रेम का रेडियस, सॉरी नॉट कैपिटल R. Yes, it's not small r. Capital R. It is capital H बड़ा है. H फ्रेम का हाइट स्मॉल h है और कपड़ा जो लगा रहे हैं उसका हाइट बड़ा है. कैपिटल H is equal to small h plus 2.5 plus 2.5. I hope you have understood this. Yes. So that is equal to क्या है वो? 30 plus ये 2.5 plus 2.5, so 35. Capital H is 35. So area of cloth used is 2 pi R. रेडियस तो स्मॉल आ रही है लेकिन हाइट 2.5, ऊपर भी बड़ी है नीचे भी बड़ी है. राइट, सो नाउ आई कैन पुट 2 into 22 upon 7 into radius is 10 into height is 35. You cannot have calculation as simple as this. 7 ones are 7 pies are 5 and 2 10, 10 and 10 100 or 2200 centimeters. You have only one. क्या है ये? area. So area, and then you may write the answer. The area of cloth required is 2200 centimeters. Is that okay? Yes. Was that fine? Yes. Did you see this? Yes. How we did? Yes. In curve surface area of frame is 2 pi R small h, but area of cloth used is 2 pi R capital H, where capital H is small h plus 2.5 plus 2.5. Clear? Okay? Alright children, the next one is actually the last one of the exercise, 13.2. Here we will complete area based sum for cylinder. Okay? Let's see. The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making a decorative pen holder in the shape of cylinder. Pen holder, एक सिलेंडर बनाना है, उसमें पेन रखनी है. पेन स्टैंड, सिंपल सा. ऑलराइट, विथ अ बेस यूजिंग द कार्डबोर्ड. यस, वो सिलिंड्रिकल जो पेन होल्डर बनाएंगे उसका बेस होगा. इट्स नॉट ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स. टॉप हैज टू बी ओपन, अदरवाइज पेन कहां से रखोगे होल्डर में? राइट. ईच पेन होल्डर was to be of radius and height. All right. Now this Vidyalaya, who is organizing the competition,
was to supply the competitors with cardboard. जो कार्डबोर्ड है, मटेरियल है, वो विद्यालय सप्लाई करेगा. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought? हम क्या करेंगे? वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले एक कॉम्पिटिटर को कितना कार्डबोर्ड लगेगा? भाई एक कॉम्पिटिटर एक पेन होल्डर बनाएगा. पेन होल्डर किस शेप का बनेगा? सिलिंड्रिकल विथ बेस. सो कौन सी सरफेस एरिया लगेगी? काउट सरफेस एरिया और बेस एरिया. काउट सरफेस एरिया एंड सो इट्स अ सिलेंडर विथ ओपन एट one end. So count surface area plus base area. That much cardboard will be required to prepare one pen holder. मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिगर. दो फिगर ड्रॉइंग इज नॉट एसेंशियल. आई ऑलवेज इंसिस्ट यू शुड ड्रॉ. इसका बेस है. Yeah, what is the radius? Yeah, diameter radius is 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The units are same. All right. Area of cardboard required to prepare one pen holder. One pen holder. मैंने टाइटल दे दिया. बस required area is equal to curved surface area plus bottom surface area. Curved surface area 2 pi RH और bottom circular. बोलिए बोलिए pi r square. आप अलग कर सकते हैं या कॉमन भी निकाल सकते हैं. क्या कॉमन निकलेगा? pi r. So you have 2h plus r. Correct? R square से r बच गया. Now pi is what? 22 upon 7. Radius is what? 3. Into h is what? 10.5. Okay. 2h है ना? 2 into 10.5 upon 10 ले लिया. Plus r is what? 3. ठीक है? हो रहा है 2 1s are 2 pi's are 5 21s are. So that is 22 upon 7 into 3 into बोलो 22 upon 7 into 3 और ये सम ब्रैकेट में. ओके. ये कैंसर नहीं हो रहा है सर, रोना आ रहा है. अब डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट में डेसिमल में लाना पड़ेगा. अरे दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. रोना नहीं है हमें. हम ब्रैकेट लिखेंगे एंड दिस इज सेंटीमीटर एरिया. एक ही वर्ड एरिया. This is not the final answer. Now दो कॉलम. बोलिए बोलिए बोलिए. Number of competitor, number of competitor and area of cardboard required. बोलो एक कॉम्पिटिटर होगा. If there is one competitor, उसको कितनी एरिया कार्डबोर्ड लगेगी? 22. अरे 66 कर देते हैं, चलेगा ना? इतना तो कर देंगे. 66 upon 7 into 24. थोड़ा सा रिजनेबल कर देते हैं. राइट? ओके. सो 66 upon 7 into 20. तो हमारे पास कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? We have to supply 35 competitors with cardboard. So what area of cardboard will be required? Cross multiplication. So 35 multiplied by 66 into 24. वो 7 नीचे रहेगा और upon 1. 7 का इलाज हो गया. रोना धोना बंद है ना. 7 1 7. आप मल्टीप्लाई कीजिए ना. 24 5 120 होता है ना. एंड मल्टीप्लाई बाय 66. आप करिए. 0 12 7 7 2. I'm writing directly 2 9 7 और ये 0 square centimeter. This is total surface area. मतलब total area of cardboard required. 7,920 centimeter squares of cardboard will be required. So the Vidyalaya will have to buy cardboard of that area. Is that clear? So here you are, a screenshot, you can copy in your notebook. Okay, so next session
will be with new formula, and that is corn. Okay? See you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day.